Good morning, students. Now, HS first year mathematics, and we are doing limit and derivatives. That is a part of calculus. Yes, limit. We have already said what is limit. That is, if we take x tends to some value, that is, x is approaches some value either from it is greater than 2 or greater than this one, or from it is lower part of that one, then for that values, what will values of fx, it is fx is what increasing, that is called limit of this function. And limit of fx, x tends to a is equal to l, means when x tends to a, fx tends to l. Another thing we say that limit of a function will exist if left hand limit is equal to right hand limit. Now today we will do some theorem and then we will proceed for our formula. That one thing that you have to remember, that in case of limit, if it is, yes, this type of two function is there, outside limit is there, then limit can enter into individual function. So this is, you can write what we have written here, that s limit x tends to a is from fx plus gx, then we can write this one as limit will go to this one as well as that one. If it is minus sign is there, then also it will work like that. That is minus also, no problem. If product is there, that is fx into dx, if it is, then we can take limit to the individual term, that is limit to fx as well as dx. So that also we have to remember, that product if it is, no problem, limit can go to the individual one. And another thing is fx divided by dx, if it is, then also limit can go to the individual term, that is fx as well as limit of this gx to dx. So students, that is the thing, that is the called that ফার্স্ট ওয়ান। আমি বাংলায় বলছি, যদি এরকম লিমিট দুইটা ফাংশনের বাইরে থাকে তখন লিমিটটা দুটোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, প্লাস হোক বা মাইনাস হোক। প্রোডাক্ট থাকলে তো কী হয়, ইন্ডিভিজুয়ালি প্রোডাক্টের মধ্যে লিমিট চলে যেতে পারে। রেশনাল বা এরকম ফ্র্যাকশন থাকলে তখনও চলে যেতে পারে। আর যদি কনস্ট্যান্ট কিছু থাকে, যেমন সাপোজ লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ some constant k into fx, so you can take k outside to the limit of this one, तो এটা আবার তুমি लिमिटेड বাইরে নিয়ে যেতে पारे। तो ये है कि कोई दो फंक्शन के बीच प्लस और माइनस हो, लिमिट बाहर में हो तो लिमिट अंदर घुस सकता है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट एक एक के में जा सकता है। अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो लिमिट दोनों के साथ भी अटैच जुड़ा होता है। अगर कांस्टेंट के बीच ऐसा होता है तो ये कांस्टेंट से भी कांस्टेंट को बाहर लेके अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये चार तरीके से हम लोग करते हैं। सो व्हेन वी डू दिस थिंग्स, देन ऑटोमेटिकली डेफिनेटली वी विल गेट helping in doing the sum also. Then another thing also you have to remember, that is second, that is called limit x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, if it is, and x tends to a, then its value is n a to the power n minus 1. So students, x tends to a means what? X approaches towards value a. Then this term, if we put x equal to here, you will see that both the term will be 0 and 0 by 0 form, that is undefined form. But as x approaches towards a, so we cannot say both are 0, so automatically we can write something. So now how to prove this one? If we divide this divided by that one, then remember, if we divide our LHS, if we take, then limit x divided by a, x to the power n minus a to the power n minus x minus a. Here
numerator we can write in short form. That is, what is the short form that we are going to write? It is, if we divide, or we can write the product form in this x minus a x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2a, then x to the power n minus 3a square. Like that, x will decrease, a will increase, ultimately unless a becomes like that. Then yes, if you multiply this with that one, you can try it, then yes, this will be that one. Now if we cancel, and limit has the special quality that how to do the limit sum, that limit this, if you would draw, then all x we have to replace by a. So here also it will be a minus 1. So it is n terms. So we can write n a to the power n minus 1. আমি বলছি এবার দেখো যে এই সামটা যখন এটা জিনিসটা যে লিখলাম, এই নিউমারেটরটাকে এটা ইনটু এটা লেখা যায় কিভাবে? মাল্টিপ্লাই করে দেখো, x ইনটু এ তো থেকে যাবে, এটা ইনটু এটা করবে, পরের বারের মাইনাস এ দিয়ে যখন মাল্টিপ্লাই করবে এটাকে কেটে যায়। অথবা ইফ ইউ ডিভাইড দিস টার্ম বাই দ্যাট ওয়ান, তখনও তোমরা এটা পেতে পারো। सो न्यूमरेटर जो जिनिसटा सेटाके এইভাবে लिखा जाए, यही लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, ये काट जाएगा। तो उसके बाद लिमिट का तरीका ऐसा होता है कि लिमिट अगर उल्टा करना चाहते हो, देन यू हैव टू रिप्लेस ऑल द एक्स बाई ए, यही है तरीका। तो मैंने यहाँ पे भी ए लिखा, यहाँ पे ए लिखा था, लेकिन ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए मतलब ए टू द पावर n माइनस 1। इसी तरीके से सभी टर्म ए टू द पावर n माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना टर्म है? n टर्म है, सो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। So students, only this much theorem is required. Now we proceed to our theorem. So then in this exercise of 13.1, if we try suppose question number 1, limit x plus 3 x tends to 3. So if I want to find the limit of x plus 3 when x tends to 3, what we have to do? You would draw this one, only you x replaced by this 3. This is the procedure, very simple one. Don't make it too much clumsy. So this way we can do. Suppose second one, if we want to get the limit x tends to pi, yes, and then x minus pi by 22 by 7. What we have to do? Directly you remove this by pi, so it will be pi minus 22 by 7. Finished. Question number 3, limit r tends to 1 pi r square. So what if we remove r, you have to replace by 1, so it is pi. Question number 4, if we want to do limit 4x plus 3 by x minus 2 x tends to 4. So what you have to do? If you draw this one, all x you have to replace by 4. 4 into 4 plus 3, 4 minus 2. So 16 plus 3 is 19 by 2. If we want to do question number 5, x limit x tends to minus 1 and x to the power 10 x to the power 5 plus 1, this is divided by x minus 1. So students, if you draw again minus 1 to the power 10 minus 1 to the power 5 plus 1 minus 1 minus 1, this is plus 1, this is minus 1, cancel, and it is minus half. Now I want to again speak in other language. Here you remember, when you draw the limit, what you have to do? Only you limit replace by its value. তো এখানে এই লিমিট উড্র করা মানে x এর জায়গায় 3 বসিয়ে দিলেই শেষ। এখানে লিমিট এটা বের করবো কিভাবে? x এর জায়গায় पाई বসিয়ে দেবো, यही तरीका है। जो लिमिट उड्र करना है, x टेंस टू जो लिखा है वही बिठा दो। बाद में कुछ दिक्कतें आएगी जिसमें बेटाने से प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे কি করা হয়, যেখানে লিমিট তোলা মানে x টেন্স টু যত ভ্যালু দিয়েছে বসিয়ে দাও। এখানেও
লিমিট তুললাম, আর এর জায়গায় 1 বসিয়ে দিলাম, এখানে লিমিট তুললাম আর x এর জায়গায় 4 বসিয়ে সিম্পলিফিকেশন, এখানেও এরকম x এর জায়গায় -1 বসিয়ে সিম্পলিফিকেশন করলাম। স্টুডেন্টস, পরীক্ষার মরশুম চলছে, কম করে পড়ালাম। সো দিস ইজ দ্য থিং, কোনো প্যানিক নিতে হবে না। লিমিট তোলা মানে শুধু x এর টেন্স টু যত ভ্যালু দিয়েছে, প্রবলেম যদি না হয় ডাইরেক্টলি এটা বসিয়ে দাও। প্রবলেম কি হবে নেক্সট ক্লাসে আমরা করবো। সো দ্যাট মাচ ফর টুডে। ওকে।